Dear students, welcome back to my video coaching. Myself S.N.PATI. My students call me PCM Allrounder because I am teaching physics, chemistry and mathematics for plus 2 science first year, second year students since 30 years. Subscribe my channel, watch my video and verify my statements. I am confident that my videos will make your funda clear and increase your answering skill in physics, chemistry and mathematics. Now, today's class. Students, now we will discuss some questions of this relation chapter important for board exam. Listen to first question. A relation R defined on natural number set n given as m related to n such that m by n is a power of 3. Test for equivalent. This is a given relation given on set of natural number. You know natural number set which starts from 1 and the complete whole numbers 1, 2, 3, 4, 5. These are the natural numbers. So R is a relation defined on that natural number set n and the relation is m by n is a power of 3. The relation is given as m by n. If m is related to n, then m by n is a power of 3. Now we will test for reflexivity. This relation is reflexive or not. Test for reflexivity. Look at when a relation will be reflexive. If it maintains the same relation with itself. Reflexive means what? Every element of the set should be related to itself. So we will search m related to m is true or false. If m related to m becomes true, then it is reflexive. If m related to m is not true, then it is not reflexive. Look at, for m related to n, we are getting m by n. So for m related to m, we will get m by m, that is equal to 1, that is equal to 3 to the power 0. So if it is 3 to the power 0, then it is power of 3. M by m is a power of 3. So we can write m related to m is true. So the relation is reflexive. Okay. Now test the relation for symmetric. So symmetric means what? Symmetric means m related to n implies n related to m. If this is true, then I will tell that the relation is symmetric, otherwise not. So given is m related to m, we have to verify this is true or not. So m related to n means what? M related to n means m by n is a power of 3, that is equal to 3 to the power k, where k is an integer. M by n is a power of 3 means I can write m by n is equal to 3 to the power k, where k is an integer. So this implies n by m is equal to 3 to the power minus k. So this implies n by m is equal to 3 to the power minus k. So if k is an integer, minus k is also an integer. So n by m is a power of 3, I can write. So what is the conclusion? We have taken m related to n and we are getting n related to m. Because n by m is equal to 3 to the power minus k means I can say n by m is a power of 3. So I can write n related to m. Okay. So m related to n implies n related to m. Okay. Now, so the relation is symmetric. Okay. Now, test for transitive. Okay. Test for transitive, that is m related to n and n related to p
implies M related to P. If this is true, then we can say that is transitive. Means we have to think given is M related to N and N related to P, and we have to find M related to P is true or false. भाव एतिकी देइछि एतिकी आनिबा पई चेष्टा करिबा जदि आनि पारिले ताहाले ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव. So given M related to given means M by N is a power of 3 given. So I can write M by N is equal to 3 to the power K1, where K1 is an integer. Again N related to P mane N by P is equal to, I can write 3 to the power K2, where K2 is an integer. Now M related to P means I need M by P. So multiplying these two M by N into N by P, I get M by P is equal to 3 to the power K1 into 3 to the power K2 is equal to 3 to the power K1 plus K2. This implies M by P is equal to 3 to the power K1 plus K2. Now if K1 is an integer and K2 is an integer, K1 plus K2 is also an integer. So I can tell that M by P is a power of 3. If M by P is a power of 3, I can write this is equal to M related to P. So we have taken M related to N and N related to P, and we got M related to P. So clearly the relation is transitive. Okay, so what happens? The given relation is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalent relation. Okay, students, look at a question. Here, look at this symbol. This symbol also indicates related to. We are writing A related to B means what you are writing? A related to B. This is a symbol for A related to B. Similarly, I can write in this way also and can write as A related to B. A related to B को हमें एमिति लिखि परिबा, एमिति भी लिखि परिबा. So in this question, this method is given. So I will read Mn related to Pq implies MQ is equal to NP. This is the given relation. Now we have to test this relation as equivalent, reflexive, symmetric and transitive equivalent. Look at the relation. The relation is MQ is equal to NP means first order pair of first constituent into second order pair of second constituent is equal to first order pair of second constituent into second order pair of first constituent. You have to remember this. Mn related to Pq implies NQ is NP. एटा केमिति लिखा है? First order pair of first constituent into second order pair of second constituent is equal to first order pair of second constituent into second order pair of first constituent. Okay. Now let us test for reflexive. Is it reflexive or not? So look at when it will be reflexive. Now if the order pair Mn is related to Mn itself, then it will be reflexive. Okay, Mn जदि निज सहित ए relation टा maintain कला, then it is reflexive. So देखिबा Mn टा निज सहित ए relation टा maintain करछि ना नहीं. तो relation टा कोन कहछि? Relation टा कहछि this implies, आपको जदि मु लिखिबी Mn related to Mn को जदि ए स्टाइल लिखिबी कोन होछि? First order pair of first constituent into second order pair of second constituent is equal to first order pair of second constituent into second order pair of first constituent. एटा कोट लिखिली given relation रो लिखिली Mn related PQ को ए स्टाइल रे देछि. सो जदि PQ जगह मु Mn लिखिबी ताहेले ए रिलेशन रो एटा आसुछि. Now देखो this equation टा true ना false? Mn is equal to Nm. This equation is true. So if this equation is true, ताहेले Mn related to Mn true है ना?
सो mn रिलेटेड टू mn ट्रू हैला माने mn रिफ्लेक्सिव हैला ना नहीं ओके हैला नाउ आमे कोन करबा सिमेट्रिक टेस्ट करबा ओके तो सिमेट्रिक टेस्ट कले कोन आगो सिमेट्रिक टेस्ट का कोन कहूची ना mn रिलेटेड टू pq नहीं की आमे वेरीफाई करबा pq रिलेटेड टू mn होची कि नहीं mn रिलेटेड टू pq नहीं की आमे वेरीफाई करबा pq रिलेटेड टू mn होची कि नहीं ओके सो गिवन mn रिलेटेड टू pq दिस इंप्लाइज mn रिलेटेड टू pq नली गिवन बोली नली आपको mn रिलेटेड टू pq गिवन नली दिस इंप्लाइज कौन पाउची mq इज इक्वल टू np नाउ ठीक सजई की pq रिलेटेड टू mn आने पे चेष्टा करिबे तो केमती सजई pq इज इक्वल टू mn आने पे ओके सो एटा np टाइप रे लिखा है से पडो नेली pn करी इज इक्वल टू mq टाइप रे लिखा है ए पडो गाणी की qm करी जस्ट रीअरेंज करी काहे की रीअरेंज करी ना एमिति लिखिले दिस इंप्लाइज pq रिलेटेड टू mn लिखि पारिबी बिकॉज़ pq रिलेटेड टू mn एमिति एया हबो केमिति जानिबी सुना mn रिलेटेड टू pq रे mq इज इक्वल टू mp दिया है mq इज इक्वल टू np को म कोन कंसीडर करथली फर्स्ट ऑर्डर पेयर रो फर्स्ट इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर रो सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर रो सेकंड इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर रो फर्स्ट एट देखो pq रिलेटेड टू mn सही फार्मूला रे जदी पकेबी फर्स्ट ऑर्डर पेयर रो फर्स्ट इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर रो सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर रो सेकंड इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर रो m सो रिलेशन ता जो स्टाइल रे देइची सही स्टाइल बा सही कांसेप्ट जदी मु pq रिलेटेड टू mn को पकेबी pn इज इक्वल टू qm आसी दिस pn इज इक्वल टू qm आसी थिला mq इज इक्वल टू np रो दिस mq इज इक्वल टू np आसी थिला mn रिलेटेड टू pq रो सो फाइनली कोन पाइली mn रिलेटेड टू pq रो पाइली pq रिलेटेड टू mn so it is symmetric okay now we will test for transitive okay ट्रांजिटिव पई कोन तीनटा ऑर्डर पेयर ने आउ पड़ियो लेट mn रिलेटेड टू pq हला mn गोटे ऑर्डर पेयर pq गोटे ऑर्डर पेयर mn रिलेटेड टू pq एंड pq रिलेटेड टू rs तीनटा ऑर्डर पेयर नेली तो ए दिस गिवन भाबी की मते कोन फाइंड करियो पड़ियो mn रिलेटेड टू rs ट्रू ना फॉल्स फाइंड करियो पड़ियो mn रिलेटेड टू pq एंड pq रिलेटेड टू rs हेले mn रिलेटेड टू rs ट्रू होची ना फॉल्स होची फाइंड करियो पड़ियो अच्छा केमति फाइंड करिया देखो mn रिलेटेड टू pq रो कोन लिखि परिबे फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट mq इज इक्वल टू np एंड समझे pq रिलेटेड टू rs रो कोन लिखि परबी फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट qr एटा माने रखो mn रिलेटेड टू pq माने इंप्लाइज mq इज इक्वल टू np आको मु एई क्लॉज रा माने रखु छी आ पई फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड इनटू सेकंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट सही स्टाइल रे एगुडा को लिखिली नाउ मोर रिक्वायर्ड mn रिलेटेड टू rs देखिबा कोन पाइया पे मु चाहू छी mn रिलेटेड टू rs तो रफ रे लिखली एटा पाया पे मु चाहू छी कोन आसीले मु mn रिलेटेड टू rs लिखि परिबी ना फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट
into second order pair ro second is equal to first order pair ro second into second order pair ro first. ms is equal to nr. एटा जदि आसीबो एटा हम लिखि परिबी ना एक आकु पाया पे चेष्टा करबा ए भितर आकु पाया पे चेष्टा कले कोन होची दिस implies mq is equal to np and सर वोल्टेज लिखि देली qr is equal to ps कहीं हम लिखिली ना डिवाइड कले मते सिंपलीफिकेशन हबो नाउ दिस इक्वेशन से डिवाइड कले कोन पाइबी mq by qr is equal to np by ps. This implies q cancel कोन पाइली m by r p cancel कोन पाइली n by s. This implies ms is equal to nr. Okay, ms is equal to nr. So if mn related to rs लिखिबी ताले ms is equal to nr पाइथिली. Now it ms is equal to nr पाइली माने this implies mn related to rs लिखि परिबी ना नहीं. This implies mn related to rs लिखि परिबी निश्चित भावे एठी मु रफ आइडिया करथिली. सो कोन हैला पिला माने mn related to pq नेली and pq related to rs नेली पाइली mn related to rs. So relation given relation that transitive हैला as given relation is reflexive symmetric and transitive so it is equivalent. चलो पिला माने परीक्षा रे तो तमे एमिति लिखिबोनी परीक्षा रे तमे केमिति लिखिबो आई हैव गिवन द इन द नोट ए वीडियो सहित नोट ही सब लिंक हिची नोट उडा सब भलो लिखिबो क्वेश्चन उडा को मेड खाली बुझेई दोथिबी केमिति लिखिले फुल मार्क मिलिबो गिवन इन द नोट रो निश्चित भाबे लिखिबो. ओके नाउ pause the video and write the note. Now 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 a simple theorem. The theorem is if a relation is equivalent then its inverse is also equivalent. Remember inverse relation from first year classes. Okay, now we will discuss if a relation is equivalent on a set then its inverse on the same set is also equivalent. Look at, let R is a relation on set A which contain elements A1, A2, A3, A4, A5. Let. Okay. Given this R is equivalent, we have to prove its inverse is also equivalent relation. So first we will prove if R is a relation, R inverse relation habo ki nahi. First eta dekhiba. So if R is a relation माने R भितरे कौन लिखि देबी. ओके R भितरे एमती ऑर्डर पेयर उडा लिखि देबी A1, A2 एमती सब ऑर्डर पेयर उडा रहइबो. different A1 different A2 एमती सब ऑर्डर पेयर उडा रहइबो रिलेशन R भितरे. नाउ तार इनवर्स जदी करिबी R को एमती जदी लिखिबी R inverse कले कौन लिखिबी A2 A1. Now look at R टा A into A रो सबसेट थिला तेणु R टा रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट A में कोई परिबी. नाउ R इनवर्स भी जो A2 और A1 आसिला ये भी A into A रो सबसेट होची. सो R1 is also a relation on set A कहि परिबी. So first step रे प्रूफ कली if R गोटे रिलेशन on set A R इनवर्स टा भी सेट A ऊपर निश्चित भाबे गोटे रिलेशन हबो. Then proof करिबी एटा रिफ्लेक्सिव हेले सेटा रिफ्लेक्सिव हबो नै सिमेट्रिक हेले सिमेट्रिक हबो नै ट्रांजिटिव हेले ट्रांजिटिव हबो नै. जेहेतु R टा इक्विवेलेंट रिलेशन देइछि ता माने ऑटोमेटिकली R टा रिफ्लेक्सिव भी देइछि R टा सिमेट्रिक भी देइछि R टा ट्रांजिटिव भी देइछि.
सो आर टा को रिफ्लेक्सिव नेबी आर टा को जदि रिफ्लेक्सिव नेबी आर इज इक्वल टू कौन लिखि परिबी ए लिखि परिबी ए कमा ए माने a1 कमा a1 बा a2 कमा a2 एमि सब लिखि परिबे आर जदि रिफ्लेक्सिव नेबी a3 कमा a3 ऑल एलिमेंट्स लिखियो पड़ो a1 a2 a3 a4 a5 नै छि माने एडे a1 a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 a5 सब लिखिबी जनरली लेट ताको a रे रिप्रेजेंट करले सो इफ आर ए हला इनवर्स डेफिनेशन अनुसार आर इनवर्स इज इक्वल टू कोन हबो सेही ए हबो इनवर्स डेफिनेशन सर आर इनवर्स इक्वल कोन हबो सेही ए हबो सो दिस ऑर्डर पीरियड आसीबो दिस ऑर्डर पीरियड आसीबो सो आर इनवर्स इज इक्वल टू सेही ए हबो सो आर इज इक्वल टू ए हला आर इनवर्स इज इक्वल टू ए हला नाउ क्लियरली आर रिफ्लेक्सिव हेले आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव हला ना नहीं okay so if r is reflexive r inverse is also reflexive okay now similarly go to if r symmetric tale r inverse symmetric hobo na nahi okay so if r symmetric r ta kon hobo for example a1 a2 thibo a2 a1 be present rahibo then only r symmetric hi pariba so if r is equal to if r is symmetric r को हम एमिति लिखि परिबा a1 a2 a2 a1 तो इनवर्स रो डेफिनेशन अनुसार r इनवर्स इज कोन आसीबो a1 a2 ऑर्डर पेयर टा a2 a1 ऑर्डर पेयर हबो एंड a2 a1 ऑर्डर पेयर टा a1 a2 हबो ओके सो r इनवर्स इज a2 a1 a2 हला now look at r inverse टा symmetric हला ना नहीं जेतु a2 a1 and a1 a2 both present in r inverse so r inverse भी symmetric हला ना नहीं clearly symmetric हला r symmetric हला r inverse भी symmetric हला now look at r transitive नेबा r inverse कोन होछ देखिबा ओके r को transitive नै की r inverse कोन होछ देखिबा so if r is transitive r भीतर में कोन लिखि परबी a1 a2 a2 a3 a1 a3 if r is transitive r भीतर में एमि लिखि परबी a1 a2 a2 a3 a1 a3 ओके सो इनवर्स मेथड अनुसार r इनवर्स इज इक्वल कोन हबो r इनवर्स इज इक्वल a1 a2 रिवर्स करे कोन होची a2 a1 a2 a3 रिवर्स करे कोन होची a3 a2 एंड a1 a3 रिवर्स करे कोन होची a3 a1 so this implies r inverse is equal to okay ठीक है ताको अरेंज करके लिखबी जेमिति ट्रांजिटिव टेस्ट टा आइडेंटिफाई करिया भी सुविधा हो ट्रांजिटिव होची नै जणा भी सुविधा हो तण कोन करबी फर्स्ट a3 a2 लिखबी देन a2 a1 लिखबी देन a3 a1 लिखबी ऑर्डर पेयर तीन डो ठीक रीअरेंज कर देली नाउ लुक एट दिस सिचुएशन रे a3 a2 a2 a1 a3 a1 माने क्लियरली एटा ट्रांजिटिव होछ ना r इनवर्स so if r is transitive r inverse is also transitive so look at students given thila r is an equivalent relation so r को गोटे रिलेशन नेली r इनवर्स भी रिलेशन देखैली जेहेतु r इक्विवेलेंट थिला रिफ्लेक्सिव नेली r इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव आसिला r को सिमेट्रिक भी नहीं परिबी जेहेतु क्वेश्चन रे देछि r इक्विवेलेंट तेणु r को रिफ्लेक्सिव भी नहीं परिबी सिमेट्रिक भी नहीं परिबी ट्रांजिटिव भी नहीं परिबी सो r को रिफ्लेक्सिव नहीं के देखिली r इनवर्स रिफ्लेक्सिव आसिला r को सिमेट्रिक नहीं के देखिली r इनवर्स सिमेट्रिक आसिला r को ट्रांजिटिव नहीं के देखिली r इनवर्स ट्रांजिटिव आसिला सो इफ r is an equivalent r inverse is also an equivalent relation okay now note टा लेखो एठी खाली बुझे दोची note टा देछि आ परे note टा भी समिति लेखिबो okay now pause the video and write the note students now a very important relation or a very important question asked in plus 2 science exam repeatedly many times the question is based on a special relation that is congruence modulo relation on the set of integers a relation this is a very special relation which is called as congruence modulo relation on the set of integers
How it is written? It is written as A B mod M. It is written and this side, this time A, this symbol B mod M. And आपको केमिति पढ़ा जाए? A is congruent to B modulo M. A congruent to B mod M. आम एमिति भी पढ़ी परिबा. Okay, shortcut रे A congruent B mod M. What is its meaning? ये जो लिखा गला एमिति पढ़ा गला A congruent to B mod M. Its meaning is A minus B is divisible by M. Okay, चिन्ह पिला माने नुआ सांगटे आसिला तमरो ए नुआ सांगर ना होची congruence modulo तार सिंबल होची एमिति आ ताको पढ़ा जाए A congruent to B mod M and meaning is A minus B is divisible by M. This is a very special relation. This M also belongs to set of integer. अच्छा divisible केमति होबो? Divisible देइछ माने निश्चित भाबे M belongs to set of integers. Now look at ओतमको this upper base बुझिया पई simple question पचारछि 18 congruent to 2 mod 4. This is true or false. 18 congruent to mod 4. True or false. Look at A जगह 18 अच्छी, B जगह 2 अच्छी. So A minus B बाहर करीबी. 18 minus 2 is equal to कौन होची 16. Divisible by M होची ना नहीं देखी भी. M जगह 4 अच्छी. 16 is divisible by 4. So ये जो statement हम लिखी थी 8 congruent to mod 4 true हैला ना false हैला? को true हैला ना false हैला? True हैला. Very good. Okay. Similarly, come to another example. The another example is 15 congruent to 3 mod 3. True or false? कौन करिया A minus B करिया 15 minus 3 करिया 15 minus 3 जो कौन है 12. Now 12 is divisible by 3, so 15 congruent to 3 mod 3 is also true. एटा भी true आसला, एटा भी true आसला. बुझि पल्ला ना नहीं? A congruent to B mod M माने A minus B is divisible by M. This is a relation defined on set of integers and this is a very special relation. Now let us check this is equivalent or not. Let us check this is reflexive, symmetric, transitive or not. So first start, let us, it is reflexive or not. Reflexive check करिया first. Reflexive check करिया माने कौन करिबा ना any integer निज सहित this relation टा maintain करि परुछि कि नाही देखिबा माने A related to A mod M true होछि ना false होछि देखिबा. If true हैला मु कहि परिबी integer maintains this relation with itself reflexive हबा. This A कौन? This A निश्चित भावे integers कारण this relation is defined on set of integers will begin to कहछि. So भाबा this A is an integer तो any integer निज सहित relation ला maintain कर परछि ना नहीं देखिबा. Now look at this relation ର meaning कोन बाहरछि A minus A नेबा A minus A is 0 होछि 0 टा divisible by M होछि ना नहीं निश्चित भावे 0 is divisible by M whatever may be the value of M. So A जहाँ नौचनियो A minus A is 0 होबो divisible by M होबो. So A निज सहित relation टा maintain करि परछि ना नहीं. Yes, A निज सहित congruence modular relation टा maintain करि परछि. So this is a reflexive relation. Now test for symmetric. Symmetric test केमिति करिबा ना A related to B नेबा खोजिबा B related to A true ना false. If B related to A true पाइली symmetric, if B related to A false पाइली ताले not symmetric.
Now A related to B नेबा माने कौन नेबा तो A related to B implies A congruent to B mod M कारण relation टा A देछि this implies A minus B is divisible by M so A minus B is equal to MK where K is an integer look at पिला माने congruence modular relation रो meaning होछि A minus B is divisible by M तो A minus B is equal to MK लिखिली M तो एठी देछि K will be an integer divisible होछि तो K निश्चित भावे integer so एठी लिखि देबी K belongs to integer set Z now this implies A minus B is equal to the MK होछि B minus A is equal to कौन हबो minus M into K B minus A is equal to minus M into K जदि हबो it means K belongs to Z okay so if K belongs to Z minus K also belongs to Z ना नहीं so B minus A is equal to लिखि परिबे this implies B minus A is equal to M into minus K so minus K गोटे इंटीजर हला if minus K गोटे इंटीजर होछि B minus A is divisible by M लिखि परिबे ना नहीं so if B minus A is divisible by M लिखिली this implies B congruent to A mod M लिखि परिबे ना नहीं so B congruent to A mod M जदि लिखिली ताहेले मो कोन पाइली ना A related to B A congruent to B mod M लेकिरी B congruent to A mod M पाइली so A congruent to B mod M लेकिरी जदि B congruent to A mod M पाइबी ताहेले रिलेशन ता निश्चित भावे सिमेट्रिक हला ओके देन आसिला ट्रांजिटिव okay so transitive रे कोन ना A related to B and B related to C देथिबो आमे खोजिबा A related to C टा true होछि कि false if true हेले transitive नले false so A related to B देछि माने A congruent to B mod M दला B related to C देछि माने B congruent to C mod M दला now A congruent to B mod M रूम लिखि परिबी A minus B is divisible by M माने A minus B is equal to MK1 where K1 is an integer similarly B congruent to C mod M रूम लिखि परिबी B minus C is equal to MK2 where K2 is also an integer बुझबल्लो A congruent to B mod M रो एटा लिखिली B congruent to C mod M रो एटा लिखिली this implies now A दिटा को ऐड कले कोन लिखिबी A minus B plus B minus C जो पाउची MK1 plus MK2 this implies A minus C जो पाउची M bracket भितरे K1 plus K2 so if K1 is an integer and K2 is an integer then K1 plus K2 is also an integer this implies A minus C is divisible by M so I can write A congruent to C mod M very simple A related to B and B related to C nelly and A पाइबा पे चेष्टा करिबी कोनटा A related to C टा पाइबा पे चेष्टा करिबी if पाइले ट्रांजिटिव हबो so from A related to B I can write A congruent to B mod M and from B related to C I can write B congruent to C mod M now this is A minus B is equal to MK1 comma B minus C is equal to MK2 A दिटा जदि ऐड करिबी A minus B plus B minus C is equal to MK1 plus MK2 minus 1 कट गला this implies A minus C is equal to M whole into K1 plus K2 this implies A congruent to C mod M so clearly it is transitive. Now we have observed that the congruence modular relation is reflexive, symmetric and transitive. So clearly this is an equivalent relation. Note lekhibo, podhibo,
ओके बुझा न पड़े टे मत मन पकई दौथो मत मन पकई देले अधे जिन बुझीज तापर वीडियो देखुव रिपीटेडली प्रैक्टिस करूँ बुझल सक्सेस तुमर 99% मोर 1%। एंड मन रख पिला माने सब्सक्राइब करियो चैनल को वीडियो को लाइक मारियो वीडियो तो भल लगे निश्चित भाव में पढ़ाऊँ बोले वीडियो को लाइक मारियो ओके। नाउ pause the video and write the note. Now pause the video and write the note.